Hello guys, am I audible? जनता, am I audible? Am I visible? आवाज आ रही है मेरी? Okay, perfect, perfect, perfect. Cool है. All right, guys. So first of all, just let me know if you guys have any doubts in previous session. Do you guys have any doubts in any of the previous session? जो हमारे दो session हुए हैं, उनमें से if you guys have any doubts, just let me know. First, we'll take that, and then we can start ahead. And the guys, attendance link is in chat. You can mark your attendance link is in chat. कोई डाउट नहीं है क्या? पिछले दो सेशंस में कोई डाउट नहीं है क्या? Should I ask something if you guys don't have any doubts? पूछ लूं क्या? अच्छा ठीक है, let's spend 5 to 10 minutes on like asking some things. Okay, so just tell me what is why we use React, or maybe like first of all just tell me what is React. React क्या होता है? Anybody who could tell me what is React? What is React? What is React, जनता? React क्या होता है? What do you guys? JS library. Okay, और कुछ? Is it just a JS library? Why we use React? What is the main use case of React? SPA, right? Build user interface. SPA. React is a library of JavaScript that helps to implement the component to the single page application. Single page application. Okay, perfect. Yeah, exactly. So what is React? When it comes to React, so React is a JavaScript library which helps us in building the single page application. Okay, and why we use React? Because React is fast, React is efficient, and all those things, right? That's why we use React. Now, what is single page application? What is SPA? SPA क्या होता है? What is SPA? What is SPA? SPA क्या होता है जनता? Anybody? What is SPA? अरे मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन तो होता है, बट लाइक और क्या होता है? हाँ, all the things will happen on the same page without reloading automatically. Exactly. Not all the things. That's not the right definition of single page application. So basically, the right definition of single page application is when we change our page, right? When we navigate from one page to other page, right? So what will happen? When we navigate from one page to another page, our page gets reload, right? Our page gets reload if it is a normal HTML, CSS, JavaScript. But when we use React, so what happens? When we navigate from one page to another page, our page will not get reload. ओके, वो पेज रीलोड नहीं होगा. इंस्टेड देयर वुड बी जस्ट अ चेंज इन द पाथ. ओके, सिर्फ एक पाथ में, एक यूआरएल में एक चेंज आएगा एंड आवर पेज विल नॉट गेट reload. Okay, so when my page is not getting reloaded, okay, when my page is not getting reloaded, so what happens? So if my page is not getting reloaded, means my DOM tree is not getting recreated, right? So if my DOM tree is not recreating, so what will happen? My website will be faster, right? My website will be more efficient because it's just a one DOM tree which is built, and we are not building the DOM tree again, right? So that is why why we use React. Okay, okay. You meant same. Okay. So that takes less time to load. Yeah, exactly. It also takes less time to load. Okay. So that is what a single page application means. Is it done? Perfect. React creates new virtual DOM by itself. Let's not go there. Okay, वहां नहीं जाते. Yes, that is true. Yes, Utpal, that is true. But yeah, perfect. Okay, cool. So now, other than this, what we did components. So what are components? Anybody? What are components? What are components in React? What are components in React?
Functions, reusable things. Okay, what else? Website is broken into simple parts which can be reused later. Okay, what else? What else? Yeah, these are somewhat fine. Functions are additional features. Functions with additional features. Components are same as functions. Okay, so basically, what are components? Components are same as your normal functions, right? So what a function can do, a component can always do. Okay, if your function can, if you can call a function, then you can call a component. If you can reuse a function, you can call reuse a component. So everything that you see, right, a function, so a component is uh, component is just like the functions returning the JSX. That's it, right? That is what a component is, right? So function returning JSS is a component. So component, right? So that is what a component is. Now why we use component, right? That is the main purpose, like why we use component. So we use component so that if I want to reuse any functionality, right, any feature or any piece of code in my application, so I can reuse that. Okay, so that's why we always prefer to break the React application into smaller components. Now how can I reuse? There are two things now. One is import and one is export. What is the concept of import and export? Why we need to import the things? Why we need to import the things? Why we need to import the things? Janta, why do we need to import the things? What is the significance of import? Anybody? Import is nothing but it's under component. Okay, whatever you want to use must be import. Okay, so you can those things like use state. Okay, we need to import the React in every component file. I'm not asking about importing React. Basically, I'm asking the significance of import, right? Why do we need imports? So we just need imports because to get the access of any external entity, right? Suppose in my file, right, I've written a function, I've written a component in a file, right? And I might need some external entity now, such as your video, audio, images, right? Or any other extra library which is there in the market, right? So we might need all those things, right? So what will happen if I need all those things, right? If I need those if I need the access of those things in my file, in my component, so I need to import them, right? And once I have imported them in my file, then I can use it like without any problem, right? So any external entity, if we want to get the access of any external entity in our component, we need to import that component. And now what is the significance of export? So if I want to use my component in any other component or any other file, I need to export it and then I can use it via the import statement, right? Then we studied props. So what are props? What are props? What are props in React? What are props in React? Properties. Okay, properties. So props are the additional properties, or props is the data that we pass from one component to the other component. So any data that we are passing from one component to the other component is known as the props. That's it. That is what a props is, right? So it can be anything. It can be anything. Any data that you are passing from one component to other component is the props. The other way to explain props is just like just just like when you call a function, you pass certain arguments, right? And you take it as a parameter. So props are nothing but same as arguments and parameter. That's it. Done. So
Props are nothing but same as arguments and parameters, or you can say props are some additional properties that we pass from one component to another component. Basically, it's a transference of data. That's it, right? Now, how to pass a prop? First of all, since we have we have, you know, two ways to call a function, right? We have two ways to call a function. One is by using this tag wala part, right? Ye jo tag wala way, just like we call the tags, we can call a component. The other way is just like the functions, just like we call a function, right? So if we are calling, so props are being passed in a form of object. Yaad hai? We pass props in a form of object, right? The word props looks like modern bro. Props for property. Yeah, Sanket, that is the same. That is the same thing. So props means properties itself, right? Props is short form of properties. Okay. So yeah, now yeah, that is the same. That is the same case. Okay. Right, so data we need to pass from parent to child. Props can pass from parent to child, but state we cannot. Yes, no, we can pass state. See, state is also a data now. State is what is state? State is holding some data, right? State is a data. So we can pass a state as a props. We can pass a state as a prop. So when we are passing state, when we are passing a state from parent component to child component, that is also a prop, right? So state is getting passed as a prop, right? So we are passing state as a prop. Okay, so that is something which we can definitely do. Okay, so ये हमारा कुछ props वाला सीन था. Now what is state? What is state? State क्या होता है? What is state and what is significance of state? I mean, from child to parent, we can pass. See, when it comes to the default definition of React, so React is, when it comes to the default definition, React is only one-way data binding. Okay, it is never two-way data binding. React is always one-way data binding. Okay, but now what do I mean by one-way data binding? So by one-way data binding, I means that we can only pass data from parent to child. We can never pass data from child to parent directly. Directly, we cannot pass. But there are certain ways, there are certain methods, there are certain ways by which we can pass data from child to parent. Okay, directly we cannot pass, but indirectly we can pass. Okay. Okay, now let's come to the states. So what are states? States are those variables, right? States are those types of variables which we need to update very frequently, right? So if we want to update any variable very frequently, right, then we can make it as a state, right? So that is what a state is. Sir, what things we can save in state values? See, when it comes to saving the things, right, so you can save anything. You can save all these things like color, button ka text, and like you can save anything that you want. States can hold text, state can hold number, states can hold arrays, state can hold objects, state can hold anything, right? You can store anything in state. So okay, let's repeat states once again. So states are nothing but, there are certain variables. States are some variables which we need to update very frequently, right? Like we studied yesterday the counter application now. So what happens in counter application? We need to update the value of count very frequently, right? So whenever I was clicking on that button, I need to update the value of count, right? So what I did, I made that count as a state, so that I am able to update its value, right? So whenever you want to deal with these kind of variables where you need to update the value very frequently, right, at that time you will create the state, right? You will create the state. So now what does state do? Just consider it as a variable. What we can do, variable in JavaScript we can do with state. Yeah, that is why. Sir, sir, why count? The reason I told you to try count plus plus and count minus minus. Now you got to know. Now you got to know why I told you to do that.
because I knew that it was not work. It will not work. Okay, I'll tell that. I'll tell that. I'll tell that. Don't worry. Okay, so yeah, now that was the whole purpose of state. Let us now start the aaj ki class. Okay, this was the recap so far. This was the recap so far. Let's now start with today's class. Anybody, any doubt so far? अभी तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो यू कैन टेल मी. यूज रेफ इज यूज, डोंट वांट रेंडर. अरे भाई यूज रेफ कहाँ चले गए भाई? यूज रेफ कहाँ चले गए? सर स्टेट मास्टर करने से हाउ मच कुड वन बिकम्स फोर? See, everywhere in your React, you have to use states. Everywhere you have to use states, right? In one file, might be a chance you are using 10 to 20 states. You are making 10 to 20 states in one file, right? States are very important in React. Okay, states are very important in React. Okay. Now what I'm doing, let us make a component. Okay, so मैंने एक component components. I made a folder of components, right? And let me make a file over here which is say list dot js. Okay, rafcp enter. Okay, so what I have done, I have made a component folder, and inside that component I have made a list.js. Recorded lecture milega. I'm not sure whether we are recorded lecture will be provided or not. Maybe Let's Upgrade can answer this. Okay, so yeah. Okay. So now what will happen? What I am doing, I have made a component, right? Cool, buddy. Cool. So now, how you will make a list? So abhi tak what we were doing, if we want to make a list, right? Abhi tak if we wanted to make a list, we were doing something like this now. Oh God. Okay. So we were doing something like this, right? List item 1, item 2, item 3, right? This is what we were doing so far. This is what we were doing so far in HTML, CSS, and JavaScript. Let me call this component. Let me call this component in my app component. Just a second. I'll comment this and I will call the list component. Right? I will call this list component and I will start this application. npm start. So yes, it is visible. Is it? It is visible. The shortcut you use now to get the default text. Basically, I am using Copilot. Okay, so I'm using GitHub Copilot, so it is automatically suggesting me the things. Okay, so yeah. So what I did, I just made a list.js component and I have called that component in my app.js component and I can see the list. Okay, say yes or no. Fine. Yahan tak anybody any doubt? Anybody any doubt so far? No. Okay, perfect. So now tell me if we have 5 items, right? If we have 5 items, I can manage that. If we have 10 items, I can manage that. If we have 20 items, I can hard code that. What if I have 1000 items over here? Is it possible to hard code like this? Or suppose, what if we don't know the number of items that are going to come? See, suppose you are making a website. Okay, let's talk about real life example. Okay, like how things are working in real life example. So what happens in real life is that we are making a website. Okay, users will get registered to our website, and once they are registered to my website, what I need to do once users are registered with our website, so I need to show the list of registered users. Okay, I need to show the list of registered users. Now tell me, do you know the number of registration that are going to come? Do you know that?
Tell me, do you know how many registrations will come? No, no, it's never fixed, right? It's never fixed, right? So can you hard code the things? In that case, can you hard code the things? Can you make list like this? No, you can never make list like this, right? Now, what will happen? What I will do, I will make a state. Okay, so I will make a state for that. Say, okay, I will make this state. Now, see, it's an array, right? So this state is an array, right? So this state is an array. Now what will happen? Now I try to understand. Okay, now try to understand this thing very carefully. So I have a function, say I have a function, right? I have a function over here, get data, yeah, get data from, oh God, give me the, okay, get data from API, right? So suppose this is my function which is getting that list, okay, which is getting that list of users from the API. Okay, we are getting that list from the API because every time when you are rendering something, you are getting data from backend. Now backend is going to give you that list, isn't it, right? So यहाँ पे what backend did, so I got, screen share is paused. I don't know what is happening. Okay, yeah. I got the data from the API. Okay. So suppose I got the data from the API. So what I will do, I will set this item from that data. Okay. So I will set the item with that data, right? So now try to understand, right? I am writing the pseudocode. This is the pseudocode of how things actually works in industry, right? Suppose my initial data is, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ data const data, right? Suppose, yeah. So now suppose my initial data is empty, right? As you can see over here, my initial state is empty. ठीक है, मेरा इनिशियल स्टेट जो है वो एम्प्टी है. अब मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज द डेटा, राइट? दिस इज द डेटा विच आई गॉट फ्रॉम द एपीआई, राइट? This is the data which I got from the API, and now what I am doing, now I am setting the item with this data. ठीक है, तो नाउ टेल मी अब मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. नाउ आई हैव द डेटा. सॉरी बट आई एम क्यूरियस टू नो व्हिच प्रोडक्ट. Frankly, I know React, but I'm here to watch product. Okay, maybe we are going to build that thing. To-do list. Okay, to-do list we can do. Okay, because that is the most frequently asked interview question, right? Two things. One is that counter application, stopwatch, and to-do list. So that is most frequently asked interview question. Okay, yeah. So now, okay, so yeah, over here, this is the data which I got from the API, and now I'm setting my items with this data. So now if I want to get items over here, if I want to get the list of items over here, so what I will do, I'll simply run the items. I'll simply run items dot map, right? Items dot map, and over here, what I will do, items dot map, and over here I will return this element. Do you know map function? Yes, cool. So now suppose this is my data, right? So this is my data. I am setting this data over here. Abhi ke liye I am setting this data over here, and see, it's done. So now no matter how many elements we are going to get, right? Suppose if I add some more elements over here, right? If I am adding some more elements over here, my UI will not break. See, my UI will not break, right? So it can render n number of elements depending upon how much data we are getting from this API, right? So
Now we are not dependent on this UI wala part, right? So my UI is not hard coded. Got it? Got it? Is it fine now? Tell me. Guys, I want to clear one thing for everyone. I see many folks are mixing React with single page application. React is just a library to build single page application and rendering patterns. Can you? Yeah, exactly. Thanks for the clarification, Aditya. Yes, it renders the items, right? So now my UI is not dependent upon the number that we are going to get, right? We're not at all dependent upon that. Is it done? यहाँ तक anybody any doubt? Yes or no? समझ में आया? How Sir, I think this arrow function structure be clear to everyone. Yeah, see, yeah, guys, if you are over here, so I am assuming that you guys know JavaScript, right? You guys should know JavaScript if you are here. So I'm assuming that you guys know JavaScript. So I am not getting into JavaScript part. Okay. यहाँ तक सबको clear है? Tell me. Okay. Yep, sir. I'm late the class. Please tell once again, please. Okay, I'll repeat that. Don't worry, I'll repeat that. So, first of all, let us let us let us see what was the problem statement, right? So the problem statement was that when I'm going to print some data, right? When I'm going to print a list, right? I'm making an application, right? And in my application, I'm getting certain registrations. And what I want to do is, if I'm getting certain registration, I want to print the list of users, those who have registered in my portal, right? So now we don't know na, we don't know the number of registration that are going to come, right? We don't know that number. So how we are going to make the front end for it? हम कैसे बना सकते हैं? बताओ मेरे को कितनी लिस्ट आइटम दोगे? We don't know the number of registration, right? So I need to make it dynamic, right? So over there I can use this states, right? So what I did, I made an initial state which was empty, right? So I made an initial state which was like this, an empty array. Okay, then what I did, I made a function, and in this function I'm getting the data from the API, and suppose this was my data which I got from the API. Okay, this was the data which I got from the API, and once I got the data, I set my items with that data which I'm getting from API, right? So now I have the data, right? Now I have the data, and I have set that data in this items naam ka array. Okay, so now I have the data, and since this data is in array format, right? Since this data is in array format, so I can easily use this map function, right? I can easily use this map function to create this list item, right? I can use that now because map is something which always works on the array, right? And this items over here is an array, right? So what I did, I run a map function on this items array, and I am returning the li element. And in every li element, I am just printing ELE. That's it. Fine. So this is how I can handle dynamic things, right? This is how I can handle the dynamic things, right? Now how dynamic things are handling, because as many elements as I'm getting, right? So if I'm getting 10 elements in this items array, this map will run for those 10 elements and will return me the 10 elements. If I'm getting 20 elements, it will return me 20 elements. If I'm getting 30 elements, it will return me 30 elements. So now my UI is dynamic. If no data is there, then should map. See, if there is no data, then it will not print anything. Okay, you can always apply a check over here like this. So if items is there, right? If items is there, then only this will run. Otherwise, it will not run. So you can always apply a check like this. Okay. Sir, what is the API and their types? भाई, let's not go there. वहां चले गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. ठीक है. Now, there is one more thing, that is life cycle methods in React. Okay, any other method to display data rather than map method? Any other method to display data rather than map method? Then we can get the complete list from backend, like the complete
फ्रंट एंड हम बैक एंड से ले सकते हैं, विच वी कॉल अ सर्वर साइड रेंडरिंग. वी कैन डू सर्वर साइड रेंडरिंग ओवर हियर. ओके, सो वी कैन डू दैट सर्वर साइड रेंडरिंग ओवर हियर. ठीक है, तो वो भी अपन कर सकते हैं. गॉट इट. ठीक है, बट अभी के लिए वी आर जस्ट डूइंग दिस मैप. अभी के लिए वी आर जस्ट डूइंग दिस मैप. ओके, यहां तक एनीबडी एनी डाउट? वी कैन यूज लूप्स ऑल्सो. हाँ मतलब लूप्स तो यार, तो सिंपल सी बात है ना. मैप कर लो या लूप कर लो, वो लूप ही है ना, लाइक वो तो लूप ही हो गया ना फिर. ठीक है, डन. सो नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड योर दिस थिंग, life cycle methods in React. What are those? What are life cycle methods in React? What are life cycle methods in React? किसको पता है? Anybody? There are certain life cycle methods in React. Do you know this? Component did mount. Okay, so basically, when your website is loaded, okay, when your website is loaded, it goes through certain life cycle. It has a life cycle, just like us, right? Your component has a life cycle. That first of all it will get mount. Okay, first of all it will get mount on the screen, then it will go through certain updation changes or something like that, then it will unmount. Right, this is life cycle. This is normal life cycle na, like हमारी भी से this life cycle na, that first of all we will born, we will do some work, we will do some hustle, and then we will die. This is the life cycle, right? Same as this, like we have three phases: we will born, we will do something, we will die. That's it, right? So the same life cycle is there with React. So React will mount, means that is the born phase of a component, right? That it is mounting on the screen, right? Then comes the updation, right? When we make certain changes and component is being updated, right? Then okay, so okay, yeah, then comes the updation phase where we change something and we do certain things and all those things, and then finally the component will unmount, right? So the method names are component, component component did mount, right? Component did update, and component will unmount. So these are the three lifecycle methods in React: component did mount, component did update, and component will unmount, right? So now okay, right? So now what happens in component did mount? So basically, as the name itself suggests, so that is the phase where my component is mounted on the screen, right? So whenever my component is mounted on the screen, whenever my component is visible on the screen, so this is that life cycle method, right? Then comes component did update. So whenever there is any changing, right, whenever there is any changes that has happened in your component, right? So this method component did update method will run and will do certain changes, right? Then comes my component will unmount. So this method always runs just before my component is being unmounted. जैसे मेरा component unmount होने वाला होगा, मतलब screen से जाने वाला होगा, so at that point of time my this unmounting will work. Okay, thank you so much, Anunay. Okay, so now see, understand this thing very carefully. Okay, understand this thing very carefully, what I'm going to tell you in like upcoming 5 minutes. Okay, there are two types of components in React. Okay, the first one is class component and the second one is your functional component. Okay, so there are two types of components in React. The first one is class component and the second one is functional component. Now we are only learning functional component nowadays, and
and and we are not learning class components anymore. Now, why we are not learning class components and why we are going to the towards the functional component? We have a reason behind it. Now, what is the reason behind that? Is basically whenever so yeah, the reason behind that is React ka official documentation. Okay, React's official documentation don't allow us, right? React का official documentation don't allow us. React का official documentation says that don't use class component, please use functional components. Now, that's why that's why we all are shifting towards the functional components nowadays. But it doesn't mean that we class components are not used in the industry. So yes, I can say out of 10, 9 projects will be on functional components and one project will be there on class component. So if you guys want to learn, you can learn, right? If you guys want to learn, just a second, guys, just a second, I'm getting a call. Okay, sorry guys, sorry. It was an important call. Guys, can anybody explain what sir did in first 20 minutes? Arey, Pavan, don't worry, it was not that important. So first 15 minutes, it was just a revision class. नहीं नहीं भाई, I don't drink, I don't smoke, buddy. So I don't have any gandi habit. One should not drink, one should not smoke. Okay. Yep. Come back. Right. So now what happens in your class components, right? In your class components, these life cycle methods, right? These life cycle methods were inbuilt. Okay. With React in class components, these life cycle methods were inbuilt. But, but that is not inbuilt in your functional components. So let me write this. Let me write this over here. Let me write this in, okay. So in React, in class components, we have lifecycle methods inbuilt, right? Inbuilt. In functional components, we don't have, okay, life cycle methods inbuilt. Okay, so we have to use hooks, right? So अब तक जो हमें बात कर रहा था class components की, sir, I think we need sir's personal contact for further reference. Is it possible? Yeah, I can give you that, but please don't spam me. Okay. Okay. Yeah. So when it comes to when it comes to class components, right? So these life cycle methods were always inbuilt, but in functional component, these life cycle methods were not inbuilt. So we have to use hooks. अब hooks की बात आई है तो let us first understand in very short कि hooks होते क्या है, right? So these hooks are the additional advantages, these additional features which React has given us with your functional components to implement certain things. So ऐसी चीजें जो कि मिसिंग थी विद आर फंक्शनल कंपोनेंट्स और जो कि इनबिल्ट थी इन आर क्लास कंपोनेंट्स, वो चीजें हमें अगर यूज करनी है हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ, सो हमें हुक्स का यूज करना पड़ता है. ठीक है, ठीक है. नाउ नथिंग इज अंडरस्टैंडिंग. I am also not understanding what you are trying to say.
क्या समझ में नहीं आया रक्षत? व्हाट आर यू नॉट गेटिंग? जस्ट टेल मी, नो वरीज, आई डू दैट। ओके, सो या, अब हुक्स क्या होते हैं? सो ऐसे वर्ड्स, राइट, ऐसे वर्ड्स जिनके साथ यूज लगा होता है, राइट, जिनके भी नाम के आगे यू आर गेट सीइंग यूज, राइट। अगर मेरे को कोई ऐसा वर्ड दिखता है रिएक्ट में जिसके साथ यूज लगा हुआ है, राइट, यूज इज अ कीवर्ड टू क्रिएट to define hooks, right? Use is the keyword to define, right? Use is a keyword to डिफाइन हुक्स। अब जैसे मान लो कौन कौन सा हो सकता है, यूज स्टेट हो गया है, यूज इफेक्ट हो गया है, यूज कॉन्टेक्स्ट हो गया है, यूज रिड्यूसर हो गया है, यूज रेफ हो गया है। सो जहां पे भी यू विल सी दिस यूज कीवर्ड ना, जहां पे भी आपको यूज कीवर्ड दिख जाए, मतलब वो हमारा एक हुक है, वो हमारा एक हुक है, राइट? दैट इज माय हुक। ओके, वेयर एवर यू सी दिस यूज कीवर्ड, दैट इज माय हुक, राइट? और हुक का यूज केस क्या है? हुक हम क्यों यूज करते हैं? हुक क्यों इंट्रोड्यूस हुए थे? हुक्स हमारे इसीलिए इंट्रोड्यूस हुए थे ताकि हमारी जो भी, राइट, वट एवर फंक्शनैलिटीज विच इज मिसिंग इन माई फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स, राइट, मेरे फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स में जो फंक्शनैलिटीज मिसिंग है और जो क्लास कॉम्पोनेंट्स में विच वॉज इनबिल्ट, राइट, सो वो सारी चीजें मैं यूज कर सकूं इन माई फंक्शनल कॉम्पोनेंट। तो अगर मुझे लाइफ साइकिल मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं इन माय फंक्शनल कंपोनेंट, तो उसके लिए हमारा यूज इफेक्ट नाम का एक हुक बना है, ठीक है? तो यूज इफेक्ट इज अ प्लेस वेयर आई कैन यूज ऑल दी लाइफ साइकिल मेथड्स ऑफ रिएक्ट। ये बहुत 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 फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है कि रिएक्ट में लाइफ साइकिल मेथड्स बताओ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रिएक्ट में लाइफ साइकिल मेथड्स क्या क्या होते हैं, यू विल सिंपली से देयर आर 3 लाइफ साइकिल मेथड्स। First one is component did mount, component did update, and component will unmount, right? So these are the 3 life cycle methods. Then अगर कोई आपसे पूछे कि React में जो life cycle methods है उसे functional components में how you will implement, so you will simply say to implement life cycle methods in functional component we have to use this use effect. बोलो, इतना समझ में आया कि लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं? क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स वो पहले से थे, फंक्शनल कंपोनेंट्स वो पहले से नहीं थे, तो फंक्शनल कंपोनेंट्स में यूज करने के लिए हम उसको क्या करते हैं? बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट? सर एक एग्जांपल, मैं अभी आई एम नॉट श्योर कि रियल लाइफ में बता पाऊंगा कि नहीं, बट अभी मैं यूज इफेक्ट का एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। या आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ यूज इफेक्ट, डोंट वरी, यूज इफेक्ट का एग्जांपल आएगा अभी। यहां तक एनीबॉडी, एनी डाउट, लेट मी नो। So use effect will use exactly. Use effect is there to implement all the 3 life cycle methods, right, in your functional component. Okay. So एक एग्जांपल कर लेते हैं यूज इफेक्ट का, राइट? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये देखो यहां पे कुछ आ रहा है रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट, राइट? सो अगर मुझे रिएक्ट हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई नीड टू डू इफ आई नीड टू रिमूव दिस रिएक्ट ओवर हियर? मुझे यूज इफेक्ट क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा यूज इफेक्ट के साथ क्या? import, exactly what I need to do, I need to import, क्या करूंगा import में? use effect from react। और ये curly braces क्यों लगाए मैंने? why these curly braces are there? Exactly, destructuring, not deframing, it's destructuring, right? So we are using it with the help of destructuring, so that's why we are using this curly braces। तो क्या बात है जनता, मजा आ गया, सच में मजा आ गया भाई। इतना ध्यान से सुन रहे हो क्या मुझे? क्या मैं इतना ध्यान से सुनने लायक हूँ? क्या तुम मुझे इतना ध्यान से सुन पा रहे हो? राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूज इफेक्ट लिखा, राइट? और ये क्या है? ये एक फंक्शन है, तो मैं इसको कॉल करूंगा, राइट? ये एक फंक्शन है, मैंने इसको कॉल कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया मैंने। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा? इसके अंदर आई विल पास अ कॉल बैक फंक्शन, मैं इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा, राइट? एंड सारा खेल जो है, जो तीनों जो जो तीनों जो तीनों फंक्शंस हमारे, जो तीनों लाइफ साइकिल मेथड्स हैं, वो सारे के सारे मैं इसके अंदर इंप्लीमेंट करूंगा। बस इतना सही काम है इसका। नाउ
एक चीज हमेशा याद रखना, यूज इफेक्ट क्या है। जैसे ही जैसे ही राइट, आई विल राइट इट ओवर हियर, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, हिंदी में लिखता हूँ, ओके इंग्लिश में लिखता हूँ, चलो हिंदी में लिखता हूँ। जैसे ही ओके कंपोनेंट लोड होगा, राइट, जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा ये फंक्शन चल जाएगा भाई। जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा, कंपोनेंट लोड होते ही सबसे पहले मेरा यूज इफेक्ट रन होगा। यूज इफेक्ट इज द फर्स्ट थिंग दैट विल रन जैसे ही माय कंपोनेंट इज लोडेड। ठीक है जी। जैसे ही मेरा कंपोनेंट लोड हुआ, जैसे ही मेरा स्क्रीन पे यूआई बना, यूज इफेक्ट इज द फर्स्ट थिंग दैट विल रन। ठीक है, ठीक है। अरे सब कुछ पसंद है भाई, सब कुछ। वो मेरी बातें सुन रहा है। डू यू नो अच्छा, डू यू नो दिस को पायलट इज ऑलवेज लिसनिंग टू अस। ये पता है क्या? ये पता है क्या तुम्हें? दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग ना। All these AI models, all these AI tools, even your WhatsApp, even your phone, right? Everybody is listening to you 24/7. Do you know this? कई बार तुम्हें ऐसे सजेशंस आते हैं, कई बार किसी ऐसा हुआ है, ओके लेट मी टेल यू, ऐसा हुआ होगा पक्का कि तुम किसी दोस्त से बात कर रहे हो, यार मेरे को गाड़ी लेनी है या मेरे को ऐसा कुछ कुछ खरीदना है, जूते खरीदने हैं, और तुम्हें ऐसे, तुमने यूट्यूब खोला है, कुछ भी खोला, वहां पे जूतों की ऐड आ गई। ऐसा हुआ है कि कभी? हुआ होगा, याद करो। ओके सर, थैंक यू सो मच। राइट। सो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? हैव यू एवर थिंक ऑफ कैसा क्यों हो रहा है? या चलो एक इसको सिंपल कर देता हूँ, इसको एक सिंपल सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, राइट। सो कभी, अच्छा, आईफोन वाले विल रिलेट, राइट, आईफोन वाले विल रिलेट। वेन एवर आई से हे सिरी, राइट, जब भी मैं हे सिरी बोलता हूँ, मेरा आईफोन ट्रिगर हो जाता है ना, राइट। आईफोन का कुछ ट्रिगर हो जाता है, ऐसे आईफोन से कुछ वो सिरी निकल के आती है और वो कुछ हमारी असिस्टेंट करती है ना। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात, कभी तुम सोचो, इट्स वेरी स्मॉल थिंग, इट्स वेरी स्मॉल थिंग। अगर अगर मेरा फोन मुझे 24/7 सुन ही नहीं रहा होता, इफ माई फोन इज नॉट लिसनिंग मी 24/7, उसे ये बात कैसे पता लगती मैंने कब हे सिरी बोला है? टेल मी। ये बहुत छोटी सी बात नहीं है। अगर मेरा फोन मुझे 24/7 नहीं सुन रहा, तो उसे कभी जिंदगी में पता ही नहीं लगता मैंने कब हे सिरी बोला है। इजेंट इट? इजेंट इट? तो हे सिरी जो है, दैट इज जस्ट, ये देखो मेरा फोन ट्रिगर हो गया। See? मेरा फोन ट्रिगर हो गया हे सिरी पे। ओके, सो माय सो हे सिरी इज जस्ट अ ट्रिगरिंग पॉइंट। ओके, हे सिरी एक ट्रिगरिंग पॉइंट है, और वो ट्रिगर कब होगा? जब मेरा फोन मुझे 24/7 सुन रहा होगा, तभी वो ट्रिगर होगा। दिस सेम लाइज विद दिस को पायलट ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो लिसनिंग मी 24/7, और इसीलिए मैं जो जो यहाँ पे बोल रहा हूँ, राइट, जो जो यहाँ पे बोल रहा हूँ, वो सब वो ऑटो सजेस्ट कर रहा है। डोंट वरी बडी, डोंट वरी, हम थोड़ा एक्स्ट्रा खींच देंगे क्लास को, क्या दिक्कत है? राइट, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा खींच देंगे, क्या हो गया? बोर तो नहीं हो रहे ना तुम? बस बोर नहीं होने चाहिए, ठीक है। दैट्स इट, दैट इज द मेजर कंसर्न। बोर हो रहे हो तब दिक्कत है। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन। सो ये चीज हमेशा याद रखना, जैसे ही मेरा कंपोनेंट लोड होता है, राइट, द फर्स्ट थिंग दैट विल वर्क इज यूज इफेक्ट। सबसे पहली चीज जो चलेगी वो हमारा यूज इफेक्ट चलेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा, लॉग से अगर मैंने हेलो लिखा, कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा मेरा कंपोनेंट आते ही, दिस विल प्रिंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। नाउ यहाँ पे वी पास दिस एरे, यहाँ पे वी पास एन एरे। नाउ what is this array? Right, what is this array over here? This array over here is known as dependency array. याद रखना, right, this is the defend, yeah, it's by default there, right? By default it is empty. Okay, so by default this array is empty and it is known as dependency array. Now इस dependency array का क्या मतलब है? What do this dependency array means? इस एरे का क्या मतलब है? सी, ये यार गाइस, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, यूज इफेक्ट, लाइफ साइकिल मेथड, दिस
all is a इंटरव्यू कंसेप्ट. ये पूरा का पूरा एक इंटरव्यू कंसेप्ट है और ये मोस्टली 99% ऑफ इंटरव्यूज में पूछा जाता है. ठीक है कि तुम डिपेंडेंसी एरे क्या होता है, यूज इफेक्ट कैसे काम करता है, राइट, एंड देन अपना जो लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, यूज इफेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट करोगे लाइफ साइकिल मेथड्स, ये सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है. तो प्लीज इनको ध्यान से समझ लेना, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लेना. ओके, so this is how I like use effect, and use effect is the first thing that will run whenever my component is being loaded, and it has a dependency array. So by default, this dependency array is empty. Okay, so by default, this dependency array is empty. Now tell me, अभी तक हमने we have handled one life cycle method. कौन सा वाला life cycle method हमने handle किया अभी तक? Tell me, we have already handled one life cycle method over here. इतने इतने कोड में एक लाइफ साइकिल मेथड हैंडल हो चुका है. Exactly, component did mount, right? Because when I say use effect is the first thing which will run as soon as my component will mount, right? So इसका मतलब ये हुआ ना कि मेरा component did mount मेथड तो मैंने ऑलरेडी हैंडल कर दिया, right? Isn't it? Yes or no? है ना. नाउ अब बात करते हैं दूसरा मेथड कि कंपोनेंट डिड अपडेट. सो वो हम यहाँ पे कैसे हैंडल करते हैं. सी, so whenever in this dependency array, if I'm putting some state, say I'm putting this state, right, I'm putting this state over here, right, या यहाँ पे I can pass many more states, right, state 2, right, state 2, state 3, right, so I can pass certain states over here, right. In this dependency array, if I'm passing any state or any variable, right, if I'm passing any variable or any state in this dependency array, right, सो जब 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 मेरी ये स्टेट अपडेट होगी, जितनी बार मेरी स्टेट चेंज होगी उतनी बार मेरा यूज इफेक्ट चलेगा. ठीक है, सो as many times my state is getting updated, right, so if my state is being updated for the one time, it will run for the one time. If it is updated for the second time, it will run for the second time. If it is updated for the third time, it will run third time. So जितनी बार मेरा डिपेंडेंसी एरे की चीजें अपडेट होगी उतनी बार मेरा ये यूज इफेक्ट रन करेगा. बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, राइट? is it done? is it done? बढ़िया. ठीक है, तो अभी तक हमने दो 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 तरीके के लाइफ साइकिल मेथड्स को हैंडल कर लिया है. द फर्स्ट वन इज component did mount. So how we have handled the component did mount? See, when it comes to the use effect, it will always run for the very first time as soon as my component is mounted on the screen, right? And whatever we have returned inside this use effect will definitely run for the very first time when my component is mounted, and this handles the component did mount wala state. ठीक है जी. Now if we are passing any state in the dependency array, so जितनी बार my state will, right, jitni bar my state will update, right, this use effect will re-render, and now we can write a sentence called return. Okay, so we can write a return over here, right? So anything that we are writing inside this return statement, right, anything that we are writing inside this return statement, this will always run when my component will unmount. So मेरे component की unmounting से just पहले, मेरी कंपोनेंट की अनमाउंटिंग से जस्ट पहले ये रिटर्न स्टेटमेंट का जो भी सीन होगा वो सारा का सारा कोड रन करेगा. बोलो कोई दिक्कत, यस और नो? समझ में आया कि हम यूज इफेक्ट में किस तरीके से अपने तीनों के तीनों लाइफ साइकिल मेथड्स को हैंडल करते हैं. सो फर्स्ट लाइफ साइकिल मेथड विच इज when return statement can use. So Sabri, when suppose if you want to do any cleanliness in your code, right, suppose आपने बहुत सारी चीजें हैंडल करी है अपने कोड में, कई सारे इवेंट्स लगाए हुए हैं अपने कोड में, right, so it is very important to detach those events, right? So
अगर मुझे वो इवेंट्स को डिटैच करना है फ्रॉम माय यूआई, सो आई कैन राइट दोस टाइप ऑफ कोड इन दिस, या मुझे कोई भी किसी भी तरीके की क्लीनलीनेस करनी है या किसी भी तरीके का सैनिटाइजेशन करना है, राइट, इन माय कोड, ओके, देन आई कैन डू ऑल दोस टाइप्स ऑफ क्लीनलीनेस सैनिटाइजेशन इन दिस रिटर्न स्टेटमेंट, सो दैट मैंने जितना भी मेस फैलाया है अपने कोड में, जब मेरा कंपोनेंट अनमाउंट हो तो वो सारा का सारा मेस मेरा कंपोनेंट के साथ ही चला जाए, राइट, 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 ठीक है। सो हाउ यूज इफेक्ट हैंडल्स ऑल द थ्री लाइफ साइकिल मेथड्स? फर्स्ट इज it will always run for the very first time as soon as my component is loaded on the screen, right? Then then okay, Sabri. Okay. So what happens if you want to clean your code, right? Suppose if you have written a code, if you have attached any events, right? If you have attached any events and you want to remove all the events before your component is unmounting, right? Because leaving a attached event unnecessarily in your code is a bad practice, right? So if you have written such kind of codes where you have attached certain events, or you want to clean your code, or you want to clean the mess of your code, right? So you want that, okay, if I'm unmounting this component, if this component is going, so all the mess that I have created in this component should unmount, right? So that kind of code you can always write inside this return statement. Okay, is it clear now? Okay, so anybody, any doubt till here, yes or no? Tell me, like height show. Yeah, you can do that. Anybody, any doubt till here, yes or no? If no doubts, then we can take a 5-minute break, and after that, we will make a to-do application. Okay, done? Done? All clear? Okay, then let's take a 5-minute break, and then we will implement this to-do application. Okay?
हेलो गाइस, सब यहीं पे हो कि भाग गए? चार बच्चे भाग गए। ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं पे है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद योर व्हाट। क्या स्टार्ट करना है हमें? ओके, या मार्क माय अटेंडेंस। ओके बड़ी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। इंस्टा बड़ी, आई एम नॉट ऑन इंस्टा। मैं इंस्टा पे हूं ही नहीं, इसीलिए ही मैं इंस्टा पे नहीं हूँ, ठीक है। टू डू लिस्ट डॉट जेएस, ठीक है। लेट्स मेक टू डू लिस्ट ओवर हियर, ठीक है जी। सो अपने को क्या क्या करना है? सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट वी नीड टू डू, राइट? क्या क्या होना चाहिए उसमें? सबसे पहले मैं एक इनपुट बॉक्स लूंगा, ठीक है। आई विल टेक वन इनपुट बॉक्स। जब मैं उस पर कुछ इनपुट करूंगा तो जो मैंने उस पर इनपुट किया है वो मुझे, एक सबमिट बटन होगा, उसके क्लिक पे वो मुझे नीचे विजिबल होना चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं ये चीज करता हूँ, ओके। लेट्स गो ओवर हियर एंड लेट मी कॉल दैट component which I have made, that is to do list, okay। and मैं copy this, paste it, save it, okay जी। in my to do list I'll write something and it's getting reflected, ठीक है। Perfect, so now what I will do, the first thing first, that is I will add a heading, say to do list h1 यहाँ पे आ गया मेरा। yes, it is a to do list। then I will prefer this input box, जिसका टाइप विल बी टेक्स्ट, ओके जी। एंड इस पे एक प्लेस होल्डर लगा देते हैं प्यारा सा, विच सेज add task, right? And done, okay। yes, over here we have a task which is perfect। yeah, okay, let me go to this thing। yeah, this is how you call a component, okay। this is how you call a component, Meghna, okay। this is how you call a component, okay। yeah, now in my to do list I'll add a button, ठीक है। button I will add, right? So yes, now I have a button over here, perfect। so now what I need to do, whatever I'm typing over here, if I click on add, it should be visible on my, like it should be visible like below, okay। so let's do it। sorry, let's do it, right? so for that what can I do? Let's make a state, right, which says task and set task, which will be the which will be my array, okay। so over here when I change this on change, okay, on change I will add some things। so first of all I will get the event and let me log, okay, let me t.target.value। so now what I have done, I am just checking, okay, just a minute। yeah, so I'm just checking over here that whatever I am writing, right? so whatever I am writing over here, is it getting printed? Yes, it is getting printing, means I am getting it, right? I'm getting it over here, right? Perfect, no worries। I will make one more task, const task, okay। so we have task and we have tasks। so tasks is a array and this task is a text। so what I will do, I will set task as e dot target dot value। so now what I have done over here, so whatever I am writing, right, whatever I'm writing, right, I'm setting it in this set task, right? so initially my task is empty and when I'm writing something I'm setting it over here, so my task is getting updated, okay ji।
यहां तक एनीबडी एनी डाउट? तो टेल मी, बता दो पहले। मैंने कुछ नहीं किया, आई हैव जस्ट एडेड अ टास्क ओवर हियर, राइट? अभी तक तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए ना? नो। अब मैं क्या कर रहा हूं, वेन एवर आई एम क्लिकिंग ऑन दिस बटन, राइट, ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन, व्हाट आई नीड टू डू, सो ऐसे ही होगा क्या? हाँ, सो ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन व्हाट आई नीड टू डू, जो मेरा टास्क है, राइट, इन माय सेट टास्क वाला एरे, आई विल सेट इट इन एन एरे फॉर्मेट एंड and now see, now we have a problem over here. Now what I need to do, जो मेरा करंट टास्क वाला एरे है, राइट, जो मेरा करंट टास्क एरे है, मैं उसको स्प्रेड करूंगा एंड उसमें आई विल ऐड अ न्यू टास्क, राइट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली. So what I have done over here, in my set task, I need to set the updated tasks, right? जो मेरे updated tasks हैं, I need to set those tasks. I need to append those tasks, right? Because I want what I want कि जो मेरे sorry, just give me a moment, guys. Okay, coffee का खत्म. Okay, no worries. So what I want over here कि जो मेरे पुराने टास्क हैं, राइट, माय ओन टास्क, राइट, माय ओल्ड टास्क शुड बी देयर एंड आई नीड टू अपेंड द न्यू टास्क. सो फॉर दिस मैंने क्या किया, जो मेरा पुराने वाला टास्क एरे था उसको आई एम स्प्रेडिंग, राइट, आई एम स्प्रेडिंग दैट टास्क एरे ओवर हियर एंड आई एम एडिंग द लेटेस्ट टास्क, राइट? लेट अस सी. Hello. Okay, I have not printed it now, so let me print that as well. Okay, let me print that also. Log. Let us log this tasks array. Okay, yeah. Let's see now. So hello add हुआ, perfect. ये hello आ गया. Bye bye. Okay जी. And tata. Yes, hello bye. तो ये एक एक पीछे होगा. That is fine. That is fine. मैं वही ढूंढ रहा था बैग में विक्स की गोली, बट मुझे मिली नहीं. और बताओ, राइट? तो सी, you can see this array, right? You can see this array over here, right? So means my tasks are perfectly getting into the array. ठीक है जी. अब मुझे क्या करना है? Now what I need to do, मैं एक UL बनाऊं. I'll make a UL now, right? And the same thing which I have done in my tasks, right, dot map, right, मैं क्या करूंगा, इस टास्क एरे पे आई विल अप्लाई दी मैप फंक्शन, लगा दूं डॉट मैप फंक्शन एंड लाइक दिस आई विल गेट द ELE एंड यहां से आई विल रिटर्न दैट ELE. बोलो, डू वी हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? अभी तक हमने क्या किया, समझ में आया व्हाट वी हैव डन? गाइस, डिड यू गेट व्हाट वी हैव डन ओवर हियर? यहां तक हमने क्या किया? डिड यू गेट दिस? यस, क्लियर? तो लेट्स सी. हेलो, ये आ गया. हेलो जी, बहुत बढ़िया. बाय बाय. ये बाय बाय आ गया जी. अब देखो, नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम. जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, राइट, व्हेनेवर वी आर क्लिकिंग ओवर हियर, सो व्हाट वी वांट कि द प्रीवियस टेक्स्ट, राइट, द टेक्स्ट आई हैव रिटन, इट शुड गो वैनिश, राइट? इट शुड वैनिश ना. माय प्रीवियस टेक्स्ट शुड गेट वैनिश, इज इट? आई वांट दिस कि मेरा प्रीवियस टेक्स्ट जो है वो चला जाए, ये टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाए, राइट? सो उसके लिए मैं क्या करूंगा? सो जो मेरा इनपुट है, इसकी इनिशियल वैल्यू आई विल सेट टू दिस task, right? Its initial value I will set to this task, and whenever I'm clicking this button, I will set task to this empty. So now what I have done, समझ में आया? ये समझ में आया मैंने क्या किया? So जो initial value है, right, the initial value of my input button, I have set it to this task. So अभी मेरे task की initial value is empty. So initially this input box will be empty. ठीक है? तो देखें, क्या मेरा initially input box empty है? Yes, my initial input box is empty.
एंड व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, जैसे ही मैं इसमें कुछ लिखूंगा, राइट, वेन एवर आई चेंज समथिंग, आई एम सेटिंग माई टास्क टू वट एवर आई एम राइटिंग इन दैट बॉक्स, राइट। सो मीन्स जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मेरा टास्क की वैल्यू अपडेट हो गई विद with this word, right, with this word, okay। And now what I have done, whenever I'm clicking, right, whenever I'm clicking the button, I'm setting my task again to empty। तो जब मैं अपने टास्क को दोबारा से if I'm setting it to empty, so the value of this input box will again be, वो वैल्यू मेरी वापस से अपडेट होकर के खाली हो जाएगी ना। बिकॉज जब मैंने बटन पे क्लिक करा, मैंने टास्क को एम्प्टी सेट कर दिया, राइट। तो जब मैं टास्क को एम्प्टी सेट कर रहा हूं, तो मेरे से इनपुट बॉक्स की वैल्यू भी एम्प्टी हो जाएगी, राइट। तो लेट्स सी, ये देखिए जी, हो गई। यहाँ पे कुछ भी डालूंगा, हो रही है। बाय बाय डालूंगा, हो गई है। टाटा डालूंगा, हो जाएगी, राइट। एनी प्रॉब्लम सो फार जनता? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, यस और नो? Any problem so far, guys? I don't think so. No? Anybody? Tell me. No, no, no. Perfect. ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? Now what I am doing over here is, मैं इसको ना एक ब्रैकेट्स में रैप करता हूँ, right? Let me wrap it in a bracket and मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करता हूँ, okay? Yes. So now with this li, right, with this li, what I am doing, I am adding a button, right? Let me add a button over here, ठीक है जी। I am adding a button which says done, which says done। So एक done मार्क करने का बटन मैं ऐड कर रहा हूं। Let me wrap it inside a div, ठीक है जी। Let me wrap it inside a div, style display flex, okay, yeah। So with my every task, right, with my every task we have a button। So जैसे ही now what I want, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा, right, it should be vanish, it should get deleted, right, it should get deleted, ठीक है। क्या मैं कर सकता हूँ? Can I do this? How can I do this? If I can do this, then how can I do this? Tell me, how can I do this? If I can do this, then how? Remove element from the array, yes, exactly। So now what I will do, I will write over here const, right, done, right, const done and set done, okay। So we have two things, right, const done and set done। So now whenever I am clicking on this button, right, on click of this button, what I wanted to do over here, कि जो भी मेरा टास्क एरे है, राइट, उस सेट टास्क एरे में, राइट, जो भी मेरा सेट टास्क एरे है, या ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज वेरी सिंपल। सेट टास्क एरे में मैं फिल्टर लगा दूंगा, दैट्स इट। फिल्टर लगाऊंगा इस पे, राइट। एंड व्हाट आई विल फिल्टर दी ऐसे एलिमेंट्स, राइट, दोज विच आर नॉट इक्वल्स टू ईएलई के। यही होगा क्या? नहीं, ईएलई क्यों आएगा यहाँ पे? माय बैड, मैंने कुछ गलत किया। अच्छा हाँ, ठीक है, या ऐसे एलिमेंट्स जिसमें ईएलई इज नॉट इक्वल्स टू ईएलई, या यहां पे मैं कर देता हूं आइटम, आइटम इज आइटम इज नॉट इक्वल्स टू ईएलई, ठीक है जी। ये हो गया। लेट्स सी दिस, रीलोड करते हैं। हेलो, ठीक है जी, बाय, टाटा। ये देखो, मैं इसको डन मार्क किया, हट गया, डन मार्क किया, हट गया, डन मार्क किया, हट गया, परफेक्ट। तो हेलो, बाय बाय, और बताओ, सब्जी लानी है, क्लास लेनी है,
ठीक है जी। और खाना खाना है। ठीक है जी। अब सपोज ये डन किया, ये डन किया, ये डन किया, क्लास ले ली, सब्जी ले आया, खाना खाना है, ये बचा है। डन है, डन है जनता, हो गया, बन गया टू डू, सिंपल सा है। कोई कोई दिक्कत थी इसमें? ओके, I'll repeat done part. Okay, I'll repeat done part once again. इसका मेरा कोई यूज नहीं आया, मैं इसको हटा देता हूँ, इसका कोई यूज आया नहीं वैसे। So what I have done in my done part, right? What I have done in my done part. So simply, when I'm clicking on this done button, right? Whatever I am doing from my set task array, I am filtering out the items, right? So from this task item, I'm just filtering out those items जो अभी इक्वल नहीं है किसके, इस वाले ELE के. So now see, we have applied this filter inside this map. Okay, so this ELE over here is the current item. Okay, is the current element. This ELE over here is the current element, right? Current element मतलब कि, current element मतलब कि जो मेरा सपोज अगर मैं अभी किस पे हूं, बेसिकली देखो, दिस ELE इज मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जिस करंट एलिमेंट पे मैं क्लिक कर रहा हूं, वो करंट एलिमेंट अगर मेरे एरे में मिल जाता है, राइट, तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा वहां से. दैट्स इट, राइट. सो बेसिकली ये जो लॉजिक लगा है, ये लॉजिक ये है कि इस करंट एलिमेंट को एरे में से हटा करके मुझे बाकी का एरे दे दो. नाउ करंट एलिमेंट कौन सा है? करंट एलिमेंट ये है, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ना, जिसके साथ, जिस एलिमेंट के साथ मेरा ये बटन अटैच है ना, दिस इज माय करंट एलिमेंट, राइट. सपोज अगर मेरा करंट एलिमेंट, अगर मैं यहाँ पे बटन अटैच है, तो मेरा करंट एलिमेंट ये हो जाएगा, मेरा करंट एलिमेंट यहाँ पे ये हो जाएगा, राइट. अगर मेरा यहाँ पे बटन अटैच है, तो दिस वुड बी माय करंट एलिमेंट, राइट. राइट. सो नाउ अगर मैं यहाँ पे डन मार्क कर रहा हूं, तो अब मैं यहाँ पे इसको क्या बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूं कि जो मेरा करंट आइटम है, राइट, उस करंट आइटम को एलिमेंट्स, मतलब जो मेरा एरे है, टास्क एरे है, उसमें से हटा करके मुझे बाकी का एरे रिटर्न कर दो. बस ये बोल रहा हूं मैं. करंट एलिमेंट में, करंट एलिमेंट को एरे में से हटा दो और जो एरे बचा उसको रिटर्न कर दो. दैट्स इट. समझ में आया? ELE, so this ELE means this ELE, ये वाला ELE, right, ये वाला ELE. This is ये वाला ELE. तो बेसिकली वो सर्च करेगा, राइट, व्हाट डज इट डू. ओके, तो मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ कि जो भी मेरा करंट ELE है, यार अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, दिस इज जावास्क्रिप्ट गाइस, कम ऑन. सो यहाँ पे मैंने क्या लॉजिक लगाया है कि अगर मेरा करंट आइटम ABC है, राइट, अगर मेरा करंट आइटम ABC है, तो सी व्हाट मैप फंक्शन इज डूइंग, व्हाट मैप फंक्शन इज डूइंग. सपोज मेरे पास एक मैप है, सपोज मेरे पास एक एरे है, राइट, सपोज मेरे पास एक एरे है which is 1 2 3 comma 4 5 6 comma 7 8 9 okay, just a minute, comma 7 8 9 comma 0 0 0, राइट. तो अगर ये मेरा एक आइटम्स एरे है, राइट, सपोज दिस इज माय टास्क एरे, ये मेरा टास्क एरे है, ओके. और अभी जो मुझे डिलीट करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली, अभी जो मुझे डिलीट करना है वो मुझे 7 8 9 डिलीट करना है, ठीक है. तो यहाँ पे इस केस में मेरा आइटम क्या है, माय आइटम इज 7 8 9, बिकॉज मुझे 7 8 9 को डिलीट करना है, सो दैट इज माय आइटम ओवर हियर, राइट. और ELE क्या होगा, अब देखो, क्योंकि ये मेरा टास्क एरे पे मैप फंक्शन चल रहा है, राइट, इन दिस टास्क एरे माय मैप फंक्शन इज वर्किंग. सो अब ये मैप फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले इस एलिमेंट पे आएगा. तो फर्स्ट केस में माय ELE वुड बी 1 2 3. तो अब ये मैच करेगा, क्या मेरा 7 8 9 1 2 3 के साथ मैच हो रहा है? नहीं हो रहा मैच, इसको एरे में रहने देगा, राइट. उसके बाद अब जब दूसरी बार ये मैप फंक्शन चलेगा, तो इस केस में माय ELE वुड बी दिस
456। तो अब ये देखेगा क्या मेरा आइटम और ईएलई सेम है। तो जब मैं कह रहा हूं कि आइटम और ईएलई, मतलब आइटम मतलब क्या है, मेरा आइटम इज 789, ईएलई इज 456, तो ये दोनों सेम नहीं है। ओके जी, इसको भी वो रहने देगा एरे में। अब वो कहेगा कि अब जब तीसरी बार मैप फंक्शन चलेगा तो इस केस में ईएलई वुड बी 789 एंड आइटम वुड बी 789, राइट। तो क्या मेरे ये दोनों ईएलई और आइटम सेम है? जी हाँ, मेरा ईएलई और आइटम सेम है, तो उसको वो एरे में से हटा देगा। तो सेम एलिमेंट्स को वो एरे में से हटा देगा और डिफरेंट एलिमेंट्स को एरे, डिफरेंट एलिमेंट्स के एक एरे बना के मुझे रिटर्न कर देगा। तो ये मैं कर रहा हूं इस वाली लाइन के थ्रू। अब आया समझ में? ओ माय गॉड। ओके, डू यू गाइस नो हाउ फिल्टर वर्क्स? मेरे ख्याल से फिल्टर में प्रॉब्लम है। एक बार फिल्टर समझना, फिल्टर कैसे काम करता है। सी, ओके, बहुत सिंपल है जनता, बहुत सिंपल है। मैंने इस लाइन में सिर्फ इतना सा लिखा है कि जो डिफरेंट, जैसे अभी मैंने डिलीट करना है ये वाला, ये डिलीट करना है, राइट, ERRE, ये डिलीट करना है। तो ये क्या करेगा, ये इस वाले वर्ड को पूरे एरे में फाइंड करेगा। अगर उसको एरे में ये वाला वर्ड दिख जाता है तो वो इस वर्ड को एरे में से हटा देगा और बाकी का जो एरे बचता है उसको रिटर्न कर देगा। दैट्स इट। बस इतना सा काम कर रहा है। बस इतना सा काम कर रहा है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार देखना हाउ फिल्टर वर्क्स, फिल्टर कैसे काम करता है। देन यू हैव अ प्रॉब्लम विद योर फिल्टर पार्ट। फिल्टर वाले पार्ट में प्रॉब्लम है फिर। अरे भाई, ओके, राइट। तो ये सीन है जनता। इस वाली लाइन को छोड़ के अगर कुछ डाउट है तो बताओ, बिकॉज ये लाइन अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही है मींस यू गाइस हैव प्रॉब्लम विद जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एंड आई गेस विद दिस वी आर डन विद द रिएक्ट का बूट कैंप, छोटा सा 3 दिन का, बट स्टिल लॉट मोर टू कवर इन रिएक्ट। सो duplicate entries from learning point of view, how to prevent duplicate entries. See, if you want to prevent duplicate entries, then again you can filter those values. मतलब तुम ये चेक कर सकते हो कि पहले ही, like when you are entering the things, right, तुम पहले ही चेक कर सकते हो कि वो already present है कि नहीं है। तो you can apply a logic of checking कि अगर जो मैं enter कर रहा हूँ, if that is already present in your array, तो don't push it, otherwise push it। ठीक है, need one more project with you? Yeah, I would be doing one more project, I guess on 23rd and 24th of January को एक प्रोजेक्ट है रिएक्ट का। सो वो प्रोजेक्ट मैं ही लूंगा, सो उस पर रजिस्टर कर लेना। जो रिएक्ट का अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है ना, दैट आई एम टेकिंग दैट प्रोजेक्ट एंड वी वुड मेकिंग लाइक जियो सिनेमा क्लोन या ऐसा कुछ हम बनाएंगे बाय यूजिंग रिएक्ट। ठीक है, तो वी कैन डू दैट। सर, फ्रंट रिएक्ट फ्रंट एंड के लिए क्या क्या यूज होता है, टेक्नोलॉजीज, फ्रंट एंड डिजाइन? भाई, रिएक्ट अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ब्रो। यस, आई एम ऑन रजिस्टर्ड, आई एम ऑन लिंक्डइन, सॉरी, ऋषभ कुमार शर्मा। यू कैन सर्च मी, ऋषभ कुमार शर्मा, आई एम ऑन लिंक्डइन। Sir, I registered for the Geo Cinema. Yeah, cool, buddy, cool. I would be taking that project, so yes, you can find me there. Any other problem, any other issue, any other problem? So what type of project for resume? यार, रिज्यूमे के लिए कुछ भी बना सकते हो। सी, if you are a fresher then long liquidation. See, if you are a freshers, like earlier time, clones चलते थे, बट अभी क्लोन्स उतना नहीं चल रहे हैं। सो प्लीज ट्राई टू मेक अ यूनिक प्रोजेक्ट। ठीक है, या, ओके, गुड नाइट गाइस, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, यू टू buddy, enjoy, bye bye. Okay guys, then yes, I guess we are good to go. Okay,
एंड जैसे कि यूनिक प्रोजेक्ट मतलब यार कुछ भी बना सकते हो, क्लोन ना हो, मतलब सी आइडिएशन ऑफ कोर्स यू कैन, आइडिया कैन बी क्लोन, राइट, बट उसका यूआई क्लोन मत करना। जैसे ई कॉमर्स बना लो, ई कॉमर्स चल रहा है, राइट, मतलब चैटिंग एप्लीकेशन बना सकते हो, राइट, चैटिंग एप्लीकेशन कैन वर्क। अपना पोर्टफोलियो ही अच्छा कर लो, योर पोर्टफोलियो कैन ऑल्सो वर्क, राइट। सो इस टाइप के एप्लीकेशन यू कैन डेफिनेटली मेक। ठीक है जी। बहुत ऋषभ कुमार शर्मा है। अरे भाई, मेरी जगह लिख जाएगी। मैं लिंक्डइन शेयर नहीं कर सकता हूँ, दैट इज नॉट अलाउड, अदरवाइज आई वुड हैव शेयर्ड, सॉरी। इसको साथ में लिख दो, जोड़ के लिख दो, ऋषभ कुमार शर्मा एक साथ लिख दो, दैट इज माई आईडी, दैट इज माई लिंक्डइन आईडी, यूजर नेम, लिंक्डइन का यूजर नेम है ऋषभ कुमार शर्मा एक साथ। लास्ट क्वेश्चन सर, क्या रिएक्ट जेएस वाला बेस्ट वेब डेवलपर है, उसका वेटेज, उसकी इज्जत? अरे भाई, इज्जत सब डेवलपर्स की होती है, इज्जत का कुछ नहीं है। योर इज्जत इज इन योर हैंड्स, योर इज्जत डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स, नो मैटर व्हाट टेक्नोलॉजी यू नो, इट्स ऑल अबाउट उस टेक्नोलॉजी में कितनी स्किल्स है तुम्हारी, दैट्स इट। शुड आई क्रिएट अ सेपरेट रिएक्ट फाइल? हाँ हाँ, उसके लिए एक सेपरेट रिएक्ट फाइल बना सकते हो, बिल्कुल उसके लिए एक सेपरेट रिएक्ट फाइल बना लो। सो ऑल्दो मैं बताऊंगा ही सब कुछ, स्क्रैच से बताऊंगा, डोंट वरी, हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है जी, चलते हैं देन, आई गेस हमारा सफर यहीं तक था। मिलते हैं आपसे 23-24 के सेशन में जियो सिनेमा के साथ। बाय बाय एवरीवन। ओके जी, ओके, लेट्स अपग्रेड।